A silent revolution in Tamil Nadu, the revival of a forgotten age-old sport, Mallakhamba. Believed to be born from the 12th century, this traditional sport combines gymnastics and yoga. In the Viluppuram district, 200 kilometers from Chennai, this is a state-level championship, fully supported by USHA Play. The women of the USHA Silai school there have actively promoted and organized the sporting event. The events are organized in villages which either have an USHA Silai school or are in close proximity to one. 300 children from across Tamil Nadu displayed their talent. Their sporting skills literally taking them to new heights. அது யாருமே பண்ணாத மாதிரி ஒரிஜினாலிட்டி பண்ணோம். அது ஒரிஜினாலிட்டி பண்ணாலே நமக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நான் பண்ணுவேன். அதுதான் எனக்கு தனிப்பட்ட ஸ்டைல். ஆமா, இதுல வந்து நம்ம இன்டர்நேஷனல்ல போய் பிளேஸ் அடிச்சா கவர்மெண்டே வந்து காசு போடுறாங்க. எனக்கு நான் வந்து மாசம் 1,20,000 ரூபாய் வாங்குவேன் பிளேஸ் அடிச்சதுனால. மனநிலை வந்து கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம வந்து எந்த கெட்ட நினைவுக்கும் போகாமடி இது வந்து நம்ம உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும். Performed over an 8.5-foot high pole at a rope hanging from a high mast separately, Mallakhamba puts these children's agility and flexibility to a rigorous test. The pole resembles a human being, and the performance is like a wrestling match against the pole, which is seen as another person. The participants' mettle is assessed in a flat 90-second slot. Contestants are expected to perform 16 skills or exercises. They are awarded points on the basis of difficulty, flexibility, execution, and grace, horizontally, vertically, among other factors. My dream is become an international player in pole Mallakhamba. It is risky, but it is the coach is make it safe. தமிழ்நாட்டு பாரம்பரிய கேம்னா ரொம்ப பிடிக்கும்ட்டு அந்த மாதிரி நானும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தேன் சார். அப்புறமா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சு சார். Sterling performance by national gold medalist Himachandran. A college student in Tamil Nadu's Viluppuram district riveted many. His movements incredibly magical. He's been learning Mallakhamba since he was in class 2. His finesse shows on the ropes too. From a humble background in rural Tamil Nadu, he hopes his medal would earn him a government job. யாரும் பண்ணாது மேலே இருந்து சம்மர் அடிச்சது அதெல்லாம் யாரும் அவனுக்கு பண்ண மாட்டாங்க. ரிஸ்காக பண்ணுவோம் சார். இது பண்ணலாம். அடுத்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கனவு இருக்கு? என்ன மாதிரி தன்னம்பிக்கை வந்திருக்கு? அடுத்த வாட்டி கோல்டு மெடல் அடிச்சு. Another showstopper, Sangeeta, a class 11 girl from Viluppuram. While her father motivated her to pursue Mallakhamba, his passion for the sport motivated her coach to train her for free, something he has been doing for many years now. Sangeeta wants to become a police officer. முன்னாடி வந்து எப்படி சொல்ல பயந்தாங்க பேரண்ட்ஸ்லாம். இந்த ஜிம்னாஸ்டிக்கே கஷ்டம், யோகா கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக பண்ணுவாங்க. இது ரெண்டுத்தையும் கலந்து இவ்வளோ உயிரை பணையம் வச்சு பண்ணுறாங்களேன்னு அனுப்ப மாட்டாங்க யார் பேரண்ட்ஸும். இது கொஞ்சமாக டெவலப் ஆன உடனே எல்லா பேரண்ட்ஸும் எங்கள் கிளாஸில் வந்து 2 வயசுலேருந்தே பசங்க இருக்காங்க. எப்படி சொல்கிறது, முட்டி போட தெரிஞ்ச பசங்க, லைட்டாக நடக்க ஆரம்பித்த பசங்களாம் இட்டு வந்து விட்டுருவாங்க. This initiative drew children from cities too.
Akshay, a 4-time gold winner at the national level, is pursuing a sports degree in Chennai. Nowadays, all of them are well known about Mallakhamba because it is come in Sports Development Authority of India. It is undertaken by Sports Development Authority, and it is also undertaken included in SDFA Games and All India Mallakhamba. One of the showstoppers was undoubtedly 5-year-old Magi-san from Chennai. He took to Mallakhamba during the lockdown. His parents love his new love for a special reason. The concentration is more important because if we miss any one of the particular event, it will be missed for him actually. And this is the main area where the children can be focused, and it will be main for them to continue in the future also. The grand finale, a stunning performance by a group of differently abled men, largely orthopedically challenged. Their show stunned the audience. இந்த கலையை இன்னி வரைக்குமே கை கால் இருக்கிறவங்க தான் அந்த கலையை பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியாவில் முதல் முயற்சியாக வந்து மாற்றுத்திறனாளிங்க நாங்கள் கையில் எடுத்து இந்த மல்லர்கம்ப கலையை நாங்கள் சாதனை பண்ணியிருக்கோம். எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய நோக்கம் இந்த மல்லர்கம்ப கலையும் வந்து பல மாற்றுத்திறனாளிங்களுக்கு இதை கொண்டு போய் சேர்த்து அவங்களாலையும் இதில் சாதனை பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் உலக சாதனை பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். The renewal of the sport has also generated a new breed of referees, many with PhDs. 16 element, 11 element is compulsory. That element is A part 1 exercise, B part 6 exercise, C part is 1 exercise is needed. Combination is requirement for difficulty element in one element to another element combined. So that is the combination. And then execution. Execution is how to presentation. That the skills. That is the execution. Experts say the union government has recognized this as a sport. Many now want the Tamil Nadu government to follow suit so that more youngsters can be drawn to Mallakhamba. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் தான் சார் இருக்குது. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சேர்த்தாக்கா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். எஸ்ஜேடியில் சேர்க்கணும் இந்த கேமை. எஸ்ஜேடியில் சேர்த்தாக்கா எல்லா பசங்களும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். And what makes USHA's intervention so valuable? Viluppuram, this is mother of Malcolm. So help with USHA play. So it is grow and moreover international level and world and Olympic also. நிச்சயமாக, அதாவது நான் 35 வருஷமாக பண்ணதில் இப்போ வந்து பண்ணியிருக்கிறது வந்து நல்லா புத்துயிர் பெற்று தேசிய அளவில் வந்து தமிழ்நாடு பதக்கங்கள் வாங்குற அளவுக்கு வந்திருக்கு. இன்னும் அது வந்து ஏசியா மீட்டு ஒலிம்பிக்கில் போய் சேரதுக்கு அந்த அளவுக்கு என்ன தமிழ்நாடு தயாராகணும்னா இது மாதிரி மாநில போட்டிகளை நிறையா நடத்தணும். USHA Silai schools have a very deep-rooted presence in rural India, and this presence in remote locations has also helped us discover many traditional sports. USHA, as you know, has always been a supporter of sports, and now it has very keenly come forward to support and promote traditional sports. And this is being done with the help of our very own Silai school women who are actively participating, not just as contestants but also as members of the organizing committee. And most of these traditional sports events are now being organized in the Silai school villages itself. Inspired by the impact of its work, USHA says it plans to scale up its involvement with traditional indigenous sports. This began with a district level meet a year ago. Nowadays, most of them, they are addicted to the mobiles, kind of the modern generation. But this is kind of unique sports which they are mentally as well as physically, they will be very strong if they do perform regularly. They can stay healthy, and we wishes to support, take these sports into international level. Yet another example of corporate support that could revive forgotten sports in India. Certainly a priceless initiative.
USHA has been breaking gender barriers with its Silai schools by empowering women to become self-sufficient entrepreneurs. USHA is also breaking gender barriers by promoting indigenous sports in the deepest pockets of India. From Mallakhamba in Viluppuram, whose story we saw earlier in the show, to an altogether different sport in Hirapura, Jaipur. Rural or urban, this is a game or a sport that has been played at least once by everyone. And that sport is Satolia. The game with 7 stones is known by different names in different states. Lingochia in Maharashtra, Pittu in Haryana, Satodia in Gujarat, Dabbakali in Kerala, but while the names are endless, the rules are the same. Satolia was always played in the villages, and the game also found its way to cities. But with smartphones taking over and young people spending more time playing virtual games, and sports, traditional sports like Satolia slowly started dying. On the outskirts of Jaipur, Suman Devi is finishing all the chores before she leaves for her shop, which is also her Silai school. Like several other women, Suman is dedicated to achieving her goals to be financially independent, to help more women learn the skills that will make them financially independent too. And for her team to win in the Satolia competition, you see, Suman dons many hats. Homemaker in the morning, entrepreneur in the afternoon, and a coach in the evening. She's one of the 4 Silai school teachers actively dedicated to keeping a traditional sport alive in the remote village of Hirapura. Suman is coaching a team of 11 girls in the game of Satolia. It is the first time that a sporting event like this is being held in this village. The girls are excited and hopeful, but it took some effort for Suman and other Silai school teachers to turn an idea into reality. हम वहाँ गए, मीटिंगें की हमने बैठ के, USHA यूनियन समिति है उनके साथ में, वहाँ के गांव के सरपंच से बात की, स्कूल में जाके हमने बात की, तो गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया, उनसे बात की, तो उनसे बात करके और वो खेल हम सिखा रहे हैं। अभी 8-10 दिन से प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं वहाँ पे रोज़। USHA कंपनी की तरफ से कुछ साथियों ने मेरे से संपर्क किया पंचायत में आके, और उन्होंने अपना मेरे को पूरा प्रोग्राम बताया कि हम इस तरह से खेल आयोजित करके बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं। तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा और हमने एक प्लानिंग की कि आप आइए, मैं यहाँ पे लड़कियों के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ बातचीत करूँगा और इनको यहाँ जोड़ूंगा। और उस बातचीत में हमने कई प्लानिंग्स की कि कैसे हम लोगों को जोड़ेंगे, कैसे लड़कियों को चयन करेंगे, स्कूल में टीचर्स से कैसे बात करेंगे, पेरेंट्स के कैसे बात करेंगे, कैसे हम आपस में एक दूसरे जिम्मेदारियां लेंगे, और एज ए पंचायत में मैं आपको किस तरह से सपोर्ट करूंगा, वो पूरा प्लानिंग हमने किया। It has been a good practice session and the girls are ready to give it their all. The day of the competition has arrived. The morale is high. The teams are busy strategizing. The villagers have gathered and the field is set for a game of Satolia. थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। हम चार हैं लेडीज़, 4 सिलाई सेंटर से, 4 ये सिलाई स्कूल चलाते हैं USHA की, तो 4 गांवों से हम 4 हैं, तो 4 टीम बनाई है हमने, तो उनके अलग अलग कोच हैं, हम चारों अपनी अपनी टीम संभालते हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं भाई, हाँ कैसे भी करो पर जीतना है। और बच्चियाँ काफ़ी खुश है भाई, हाँ हमें ये खेलने का मौका मिला। It's the red team versus the yellow team first. The referee explains the rules to both the teams. The yellow team has won the toss and has chosen to hit the Satolia first. शुरू हो गया है साहब,
What follows is an intense and nail-biting round of Satolia between the two teams. While Team Yellow has won this round, they still have the final round to go. As the game progresses, more and more villagers join in to cheer for the girls. From young to old, everyone is rooting for their favorite team. The second round between blue and the green team is even more interesting. The girls were quick to break the Satolia. Some have even been disqualified in the process, but the audiences are on the edge of their seats. The green team won this round. They'll be playing against the yellow team for the prize. Credit for organizing such an event goes to USHA and the women of the Silai school. Such was the impact of this initiative that a change was seen in other villages too. खेल से पहले भी जो ही ये चर्चा शुरू हुई तो गांव में मैं जब निकलता था तो मुझे बच्चे खेलते नज़र आ रहे थे, तो मैंने कहा ये अचानक सतोलिया का माहौल कैसे बन गया। मेरे गांव में लड़कियां खेल रही है, रायपुर में लड़कियां खेल रही है और घर पे खेल रही हैं, तो मुझे लगा कि ये जो अपन ने बातचीत की है 1-1.5 महीने से, तो लड़के लड़कियों में ये उत्साह बढ़ा है। ग्रामीण खेलों को प्रमोट किया जाना चाहिए और बहुत सारी गवर्नमेंट सरकारें भी इसको प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि ग्रामीण जो खेल हैं वो खेल इस तरह के हैं जिससे कि सामाजिक भावना उत्पन्न होती है बच्चों के अंदर। अभी हम देख रहे हैं आज की तारीख में कि जो बच्चे हैं वो एकांकी हो गए। एकांकी मतलब वो अकेले रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं और मोबाइल या इस तरह की डिवाइसेस पे ज़्यादा रहते हैं, जो कि उनको अकेला होता है उनके साथ। In a remote village like this, where girls were restricted to their houses and tied to the chores they had to perform at home, the Satolia competition is helping break gender stereotypes and also encouraging a healthy lifestyle. अब ग्रामीण खेलों की बात करें तो उनमें शारीरिक कसरत बहुत अच्छे से होती है, मानसिक कसरत तो बहुत अच्छे से होती है और एक दूसरे के प्रति जो प्रेम की भावना है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। तो इस तरह की चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। हम ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह के खेल होंगे तो बच्चे जो है वो अपने परिवार से, अपने समाज से और अपने गांव से, अपने क्षेत्र से जुड़े रहेंगे। बच्चे अब इन गेम्स में इन्वॉल्व नहीं हैं, बच्चे इन गेम्स को अभी खेलते नहीं, वो इंडोर में रहते हैं और स्पेशली लड़कियां जिनके साथ हम ये गेम कर रहे हैं उनके लिए तो ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो बाहर आएँ और उस तरह के खेल खेलें। ये सिर्फ और सिर्फ उनके शारीरिक और मानसिक विकास की बात नहीं करता, जेंडर जो अनइक्वलिटी है, जो लड़के और लड़की में भेद है, उसको भी कम करता है। जब ये लड़कियां बाहर आएंगी, इस तरह के खेलों में इन्वॉल्व होगी तो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनेगी और मजबूत बनने के कारण वो समाज में अलग तरीके की पहचान बना पाएगी। The whistle for the final round has been blown. It's the fight to be the best. And it's the yellow team that has won the final. The girls are beaming with joy, for they had been practicing hard. But the other teams are not disheartened. They see this as an opportunity. बहुत अच्छा लग रहा है मैंने लाइफ में पहली बार इतना स्टॉल खेला है, जो भी ऐसे गांव के अंदर। मेरे को खेलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैंने पहली बार ये मौका पाया। पहले जब लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे, आज तो लड़कियों का सम्मान भी होने लगे और वो खेलने के लिए उत्साहित भी है और उन्हें ये मौका भी मिल रहा है। मैं तो इसके लिए उषा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जहाँ तक देखा जाए कि लड़कियों को गाँव से निकलने नहीं दिया जाता, और अच्छा है कि इस मौके से लड़कियां आगे निकल रही है और बहुत आगे तक निकले, बहुत ही आगे तक निकले। मेरा तो कहना यही है कि बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उषा की, जो ये डिसीजन उषा ने लिया और लड़कियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। Suman's team might have lost today, but it has taught the girls to work harder and has motivated them to keep the sport alive in the village. यही जो अभी जो मीटिंग की है वो इसे हम आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं। उषा हमारे साथ है हर कदम पे। उषा का तो हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। और ये भी उषा सितोलिया खेल का नाम भी यही देंगे, हम उषा ही देना चाहेंगे इस खेल को भी।
बट ये तो जैसे साथ है पर इसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। Usha has given new hope to girls today, and for Suman, there is independence, confidence, and an identity. अपनी कमाई से फिर मैंने अपनी खुद की दुकान बनाई और आज मैं अपना सेंटर वहाँ चलाती हूँ। और उषा से जुड़ने के बाद में मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। मैं अपनी ज़िंदगी खुल के जी रही हूँ, मेरा खुद का परिचय हो गया, खुद के नाम से जी रही हूँ मैं। हाँ भाई, सुमन सिलाई वाली है। ऐसे तो लोग उसकी बहू, उसकी बीवी ऐसे जानते हैं, पर अभी मुझे मेरे नाम से जानते हैं। मेरी खुद की पहचान बनी है उषा इंटरनेशनल की वजह से। From conducting Kalaripayattu events in Kerala to organizing archery competitions in the remotest parts of Jharkhand, Usha is committed to developing and promoting rural traditional sports and has organized various sporting events across India. This time, Usha collaborated with Bethany Society to organize a district-level archery championship, Siat Khanam in the East Khasi Hill districts of Meghalaya. Siat Khanam is a regular activity among the men of the Khasi tribe, and this is a traditional sport loved and nurtured in Meghalaya. The event saw the participation of adults and children alike, with cash prizes, certificates, and mementos being distributed to the winners. Usha's initiative to preserve the ancestral tradition and culture of archery among Khasis is a way of keeping alive a legacy for future generations.